बकाओ बकाओ। सबको जुहार आओ आज बकबक रो गोटे फ्रेश एपिसोड के सबको स्वागत। आज बकबक रो एपिसोड इंटरेस्टिंग एथि लगी हवा कागरे मुई कथा लागबी मोर मित्र संगे बेले समस्त तो हमर फोटो माने देखि दिबे कि आमे केनता जाहि गले पूरा छुआ बागी रही जासु तो हेथिर लगी आज आमे कथा लागबा मित्र संगे किंतु टिके सीरियस टॉपिक रे सीरियस हेबार आगु टिके तांकर विषय भी जानि पकामा से काना आन काना करसन काना नाही मुई तो जानि चाहे कि मुई कहमी बेले पूरा कहत मेनो तांकर विषय तांकर नु आमे सुनमा तांकर बाबद रे मित्र बाबद सुनमा मित्र मुहनु चलून वेलकम करमा वेलकम मित्र जुहार आओ काना खबर रे आसबार बाकी अछि न्यूज जेते बेल तक न्यूज पेपर ते नहीं है खबर रे नहीं न तुम्हें अजब कथा कहला एटा तो मोर मित्र अछन यूनिवर्सिटी रे काम करसन किंतु यूनिवर्सिटी के आसपास आगु से आहुरी बहुत किछि करूतले बहुत किछि माने फुटबॉल खेलुतले कबड्डी खेलुतले क्रिकेट खेलुतले ब्रेक डांस करूतले बहुत किछि करूतले सिनेमा बहुत देखुतले आमे झगड़ा भी हेतलो सेंगड़ा गुटे सेंगड़ा लगे बहुत दिन तक हमें कथा भी नहीं लगी तो इस विषय कथा लगवा किंतु जेहेतु मित्र लॉ रो प्रोफेसर आन की लॉ डिपार्टमेंट अच्छा संबलपुर यूनिवर्सिटी तांको बेसिकली हम सीरियसली लॉ विषय टिके जानवा किंतु तार आगु जदियो मुई जानि छ अलगा माने नहीं जानथिबे कि मित्र गोटे बैंक रे चाकरी करूतले लॉ करे सारला परे बैंक रे चाकरी करूतले आ बैंक चाकरी छाड़ी करे का करे यूनिवर्सिटी रे लेक्चरर हेबार लागि आसले सेटा हमें पहला सुनमा तांकर यस मित्र तमे म्यूट रे छ म्यूट तमन म्यूट हे जे हां अनम्यूट कर दिना हां बड़ा मुश्किल है कंट्री लगे छाड़ी के लिए असली एक्चुअली देखो ले जिन हिसाब रे मी जिन टाइम रे मी लॉ भी करी हां हमें मैट्रिक 87 रे पास करना 89 रे प्लस 2 पास करना और हेती बेले लॉ के करियर हिसाब रे हेते सीरियसली कहीं नहीं होते तो मुई संबलपुर यूनिवर्सिटी एलाल लॉ कॉलेज रे नोआ इंटीग्रेटेड लॉ इंट्रोड्यूस हेतला 86 87 89 88 89 में तो इंटीग्रेटेड लॉ रे एडमिशन तो करि देनु हैं तो 89 रु 94 एलाल लॉ कॉलेज रे पढ़ली पर हेती बेले लीगल एजुकेशन रे जहां अवस्था थिला लॉ स्टैंड फॉर लुक एंड राइट हैं तो 5 बरस केते बेले कॉलेज का जणा नै पले आउ तारपरे लकीली मुझे 2 बरस यूनिवर्सिटी रे एलएलएम पढ़ी 94 96 तो हेटा पढ़ला बिल के लॉ रो रियल मजा उठा राइट आउ लॉ बोले जनता खाली आपको खाली कोर्ट कचरी तक सीमित देखा जाउतला लॉ रो अपॉर्चुनिटी ता भी भल से कम बेसिकली के जानली किंतु हे टाइम रे 96 रे पास आउट कला पर मुई इमीडिएटली संबलपुर बार रे जॉइन कली जॉइन तो कली किंतु बहुत बेसी सीरियस प्रैक्टिस करी नहीं पाए या तो मुई एंजॉय नहीं करू थाई से कोर्ट एनवायरनमेंट के बेसी आई वाज मोर कंफर्टेबल विथ द लाइब्रेरी रे मी बेसी एंजॉय करती किंतु तार संगे संगे इटा भी थिला जे उकिलाती प्रोफेशंस के बहुत बेसी जेगले इनिशियल स्टेज रे बहुत बेसी रेस्पेक्ट कह कि मान नहीं दे पारु थे तो गुटे
इमिडिएट अर्स्ट थिला जे निज को एस्टाब्लिश करबो तार बाहर गुटे गुटे दंसना गोटे बेगेज भी थिला जेतु घर समस्ते कम बेसी कि भल करूथिले आ एक्सपेक्टेशन टिके थिला तो चाहूथुनु केनता कि गुटे फाइनेंशियली गुटे सोशली रिकॉग्नाइज सेटअप रे पोसिजर गुटे पहचान बनी गयो तो हे टाइम रे बहुत टे गुर्दुटे एग्जाम देई तो लकीली बैंक रे क्लिक कला हां जदियो हे टाइम रे मी नेट भी क्वालिफाई करथिली न लेक्चरशिप रो किंतु बैंक रे मिलला फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत बेसी थिला और लेक्चरशिप लॉ सब्जेक्ट रे ओडिसा रे एचमी भी बहुत भल नाही प्राइवेट अनुष्ठान के छाड़ी दे तो पहला मौका रे मी बैंक बाउंसर बोले गली किंतु मोर मन अछि बैंक मुई और सत्य दुई जन पहला पोस्टिंग गुवाहाटी रे थिला कनाडा बैंक रे तो गुवाहाटी से जेतले मी ट्रेन रे गला बेले मी डायरेक्ट देखुथिली जे इज इट द गोल that I have set for myself कारण मैं इन तक सब रहा के चाहूं थे और समता नहीं थे तो कनाडा बैंक दु फिर पछे का यूनियन बैंक रे भी जल्दी स्केल टू ही गला तो मैं जल्दी बैंक भी चेंज कर देती तो रियलिटी ऑफ लाइफ के मी बधे आउट के बहुत से देखी पाली ई पार्टनर ऑफ पोस्टिंग बैंक बैंकिंग सर्विस रे थाई की भी जेन लिमिटेशन थिला और निजर ग्रोथ रो जेन हिसाब रे मी चाहू थिले हबा काय बोलथि से जिंस गुडा काय थे तो इंडिविजुअल मी नाही कह कि मोर बैंकिंग काम कला तो तांकर बोधे हाँ आवाज आवाज नहीं आसपार म्यूट तो म्यूट ही है म्यूट अनम्यूट कर दिया टिके प्रॉब्लम ही जाइए तो एक्चुअली अमित हर जेनटा कहले कि तांकर गुटे बैगेज केतरा तांकर बैगेज एक्चुअली लाइट बैगेज केबे भी नुहे तांकर बैगेज दंसना फैमिली रो बैगेज ता बहुत हेवी बैगेज टे तो हमें रो मित एचा आसी गले न मित तो मित नुसुमा हां तो मित जेना मुई कहतली तमे गलो दंसना फैमिली रो बैगेज तापरे तार आगु कहतलो पार्टनर रे तमर गुटे चेंज हला आउटलुक माने जॉब के नहीं करी ठीक अलगा हला किंतु पहला सुनमा दंसना फैमिली रो बैगेज टाका नहीं बैगेज वाले मैं व्यवहार कर देली वर्डटा बैगेज किंतु आई एम वेरी प्राउड ऑफ नहीं एक्चुअली बैगेज आए माने जदी जने दंसना फैमिली रो जने जदी साइकिल थी पड़ी गला बेले सेटा भी न्यूज़ हसी माने अरे से साइकिल थी पड़ी गला बोली के आ एक्चुअली हेतिल लगी माने समस्त जानबार कथा कि बीइंग ए son or daughter of Dansana family is not a easy thing so heita actually again मतलब बोधे यूजिंग द वर्ड बैगेज बोधे प्रॉपर नहीं हुए हमें व्यवहार करते बट टेक इट लाइटली एक्चुअली बापा जयदेव दंसना खैर ताकू जोगाचार्य भी कहसी तो लिटरेचर रे तांकर बहुत तमरा सबले टिके म्यूट हो जाउछे का करे म्यूट हो जे मु बुझी ना परबार हां तमरा सबले टिके म्यूट हो जाउछे टिके अनम्यूट हां हला अनम्यूट हला हां कह एक्चुअली जना कटि जाउछे तो जना ना पड़वा केते बेला कटु छ केते बेला आसी हां एक्चुअली जदि बापांकर परिचय न देखबो
तो बापा जयदेव दंसना नाकरा तमर फिर म्यूट हो गला तो मित्रटा म्यूट हो जाउछे तो मुई कहि दउछे कि तांकर बापा जयदेव दंसना नाकरा फुटबॉल प्लेयर थिले नाकरा योगाचार्य नाकरा काना एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशनिस्ट नाकरा तापरे सबु सबु जगह रे ना करिछन से तापरे तांकर पांचटा पुओ बड़ पुओ रेलवे रे 2 नंबर पुओ डॉक्टर 3 नंबर पुओ एलाइड ऑफिसर से माने रेलवे रे बहुत बड़ बड़ पोजीशन रे छन 4 नंबर पुओ अगेन बैंक रे 5 नंबर पुओ जेंटा कि मित थले मुई मितर जदी कमी मित बोधे बहुत बहुत भल नाही पढुताई बहुत एवरेज स्टूडेंट थले तो सेटा सेटा तांकर लागि गुटे बहुत चैलेंजिंग थिला एटा कि माने सबु दादा माने भल 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 सबु करूछन आ मुई काना करमी आ से तापरे काना कि से जेन 5 वर्षिया लॉ कोर्स कले आ मोर मित गुटे बहुत बहुत प्रिंसिपल वाला लोक बहुत प्रिंसिपल वाला लोक बोले माने बहुत ही प्रिंसिपल वाला बहुत ही प्रिंसिपल वाला लोक कोई एग्जांपल देवाटा डिफिकल्ट हेबा कांगरे कतकी से प्रिंसिपल वाला आन के नाही इटा नाही करे माने मुई नाही करे इटा मते भल नाही लागे माने मते भल नाही लागे मुई जदी कैंसी लोक के भल नाही पाए ई पर्टिकुलर जिनिस लागे बेला ताके भल नाही पाए तो ई सब जिंस तांकर अच्छे तांको जेते कहले भी से माने सेटा के चेंज नाही करन माने जाके भल नाही पान ताके भल नाही पान आमे सेतिर लागि बहुत जन बहुत दिन तो कथा भी नहीं लगुतई मुई गुटे सिंगड़ा मागितली तांको से कहले नै मु सिंगड़ा नाही दिए आ से गुटे सिंगड़ा लागे हमें बहुत बरस बरस तो कथा नहीं लगे माने लागु जे बोले क्लास 8 थ्रू हमें कथा नहीं लगे प्लस 2 और ग्रेजुएशन मिड ग्रेजुएशन तक तो एचन माना देखु जे तो मित के हमें रखू माना देखु जे माना को जे दुई दादा को प्रणाम बोले करे तो मित हां मुई टिके कहि देली जेंडा कहबा कथा तमे कंटिन्यू करो नहीं पूरा सुन ली इनफैक्ट भल कहलो शॉर्ट एथिले नहीं किंतु खाली हमर दंसनार खाली बापा आमे पांची भाई तो स्नीक नहीं थाई केंदा ना मोर काका बड़ काका जानदेव दंसना से जेएम कॉलेज रे प्रिंसिपल हे रिटायर्ड करले सान काका जानदेव दंसना स्टेट प्लेयर कबड्डी थिले तार संगे संगे बैंक रे भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हे कि से भी रिटायर्ड करथिले मोर नाना माने जे माने थिले से माने भी टीचिंग बैकग्राउंड रो आउसथिले मोर जन कजिन माने दे आर आल्सो डूइंग वेरी गुड इतार बाहरे भी जन हमर जन एक्सटेंडेड फैमिली थिला केंदना हमर गुटे भल इनफैक्ट बहुत फोटो भी शेयर करसी प्रति वर्ष डिसेंबर एंड बैंक के हमें गांव रे गुटे गेट टुगेदर करसी फैमिली जेंटा कि हमें फैमिली गैदरेशन बोल के कहसु सेतिर फोटो देखले जानि पारबे जे कि हमर परिवार सीमित खाली दंसना सरनेम तो नहीं है बहुत एक्सटेंडेड वे तो से किस्म रो बापा बहुत बढ़िया तंपर से दायरा खाली बापा बोल के न मां भी कहना बापा जदी बाहर रहउतिले घर के मैनेज करबार पूरा एंटायर क्रेडिट मांकर थिला कहना बहुत टाइम हमने तो बेसी उदुरछा थिनु तो केभे रंधा घर के इटा नहीं पचरे जाउ थे जन के घर खाना अच्छे कि नहीं सीधा संग साथी डाकी हमतुनो एंड लकीली माँ वाज सो ग्रेसियस कि केभे कहा के नहीं कोई जे नहीं के कहीं अंडू तो those are very good memory तो आई विश कि से किस्म रो माहौल मेंटेन करा जायता सेटा बहुत बढ़िया राइट तो हमें से विषय एसन कथा लागवाले सेटा गुटे अलगा एपिसोड हेबा पूरा किंतु आजिर एपिसोड ता पूरा पूरा डिफरेंट है से विषय गुटे डेफिनेटली गुटे फेस टू फेस कथा लागले
बहुत बहुत भल लगा ऑनलाइन रे सेटा भल नहीं लगे फेस टू फेस कथा लागला मजा मजले से सब करे के कथा लागबा तब मैं तो जेंता आज हमें गोटे टॉपिक टे हमें डिस्कस करे चाहू कि हाउ लॉ इज मिसयूज्ड आउ तमर तमर फोन हां हाउ लॉ इज मिसयूज्ड आउ लॉ के केन केन लेवल ले मिसयूज करायसी केन केन जगह रे मिसयूज करायसी माने तार ऊपर टिके कहो एक्चुअली लॉ वाले भी हमें काना बुझु देखवा କଥା नॉर्मली लॉ वाले कहनी भी यंग पिला के जदी लॉ पचराबो वाले संगे संग से रिलेट खाली क्रिमिनल लॉ के करबा पर लॉ रो परिधिटा क्रिमिनल लॉ तक सीमित नुहे हमें समस्त जानी छु किंतु कहला बेले खाली क्रिमिनल लॉ के सीमित कर लॉ टा हमर लाइफ रो प्रति भाग रे प्रति एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व अछि तो मिसयूज करवाटा एक्चुअली देखबार अछि लॉ रो मुई पर्सनली मुई पिला को पढ़ाला बेले या कथा लागला बेले मुई दुई हिसाब रे कहस जे whether the existing जे लॉ अछि ए लॉ टा गड़बड़ है कि लॉ रो इंप्लीमेंटेशन रे गड़बड़ अछि लॉ के लागू करला बेले के गड़बड़ अछि हां तो केतेटा जगह रे लॉ जेन तयारी करा हेसी तो केन पर्सपेक्टिव रे लॉ तयारी करा होची सेटा देखबा पड़ता तो जेतेले लॉ तयारी करा होची के तयारी करूचे काल लागि तयारी करा होचे काहे लागि तयारी करा होचे एंड देन केनतागिरी सही जिंसटा के लागू करला बिल्कुल तो जेतेले लॉ तयारी कला बेलके जदी तुमर चिंताधाराटा बायस हे गिरी होचे पर्टिकुलर गुटे लेवल रे इरा सेंता काना निहिटा जदी टेढ़ा होचे बोले घर भी टेढ़ा बन तो लॉ बनाने वाला केन मनसा नहीं लॉ बनै छी तो सर झुकाव केनता करी रहबा जे लॉ बनाला बेल के काना फेयर प्ले हे पारबा के लॉ रो ऑब्जेक्टिव ता काना लॉ टा गुटे माध्यम है आ हे माध्यम टा एंड रे केतले बदल लक्ष्य टा काना होबा जस्टिस डिलीवरी हां जनता की अमर्त्य सेन रो बही रे कोहा जे जेते बेल तक छोट माछ के बड़ माछ खाउथबा न तुमे जस्टिस डिलीवरी करी नहीं पार तो हमर जे स्ट्रक्चर बनी छे जेहनी किस्म रो जेहनी भी इंस्टीट्यूशन बनी छे जेहनी भी स्ट्रक्चर बनी छे काना हे जे छोट माछ रो इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट करू छे कि नहीं बड़भागी पेन काना हेसी जे हमें आइदर सेंटिमेंटल हे जेसु या गुटे प्रिजम्पशन रे चलसु जे इटा भल आए बोलते किंतु चेंजिंग टाइम रे हमको हमर लॉ के अपडेट करबा जरूरी है तो जेते बेले अपडेट नहीं करू लुको जेन माने पावर रे थिसन या लुको जेन माने कि फेवरेबल पोजीशन रे थिसन से माने लॉ के एब्यूज करसन या जेन माने पावर रे थिसन से माने सेटर ऑब्जेक्टिव के नहीं बुझी गिरी गुटे गुटे मेकानिकल वे रे लॉ के लागू करसन मेकानिकल हे जिवे तो जेन जगह रे मेकानिकल हे जिवे त रिजल्ट भी मेकानिकल हबा गुटे गुटे साधा कथा रे कहूचे जे जदी मुई कहमी जे के गुटे मैथमेटिक पूरा लॉ टा गुटे अरिथमेटिक हिसाब रे धरा जाय नहीं पाए केना ना लॉ टा सब बेले ह्यूमन लाइफ के इफेक्ट होचे ह्यूमन स्ट्रक्चर के इफेक्ट करूचे तो ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन स्ट्रक्चर एते डायनामिक है तुम्हें जदी सेटा के गुटे फॉर्म रे बांधी दबो फॉर्म रे फॉर्मेलिटी करके रखी दबो तो एंड रिजल्ट रे तुम्हें जस्टिस दे नहीं पारो तुमको केस टू केस अलगा हिसाब रे ट्रीट करके देखवा के पड़ला तुम्हें प्रेसिडेंट हमें फॉलो करूछु बोल के फॉलो करूथिमी न बोलबाटा बहुत डेंजरस है किंतु बेसी भी कर दबो बोले भी प्रॉब्लम है एंता ना गोटे केओस भी हिजबार पॉसिबिलिटी अछि तो गोटे बैलेंस कांस्टेंट रखवा जरूरी है जे गोटे लॉ टा सब बोले प्रोग्रेसिव है तो प्रोग्रेसिवली मी सेटा के इवैल्यूएट करू जे कि नै यदि ठीक से इवैल्यूएट नहीं करबो बोले लॉ टा धीरे धीरे करी बायस हे जिवो जे मनसा नै करी बनै थिबो से मनसा के फुलफिल करी नहीं पाए तो जरूरी है कि लॉ के टाइम टू टाइम तुमको अपडेट करना पड़ेगा तो देखिए एब्यूज करते डिपेंड करछे कोन किस्म रो लॉ के नीति के देखिछे हां जने जदी ऑफिस रे अछि ताहा के किछि क्षमता दिया है
किंतु से क्षमता जेन दिया विथ पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी किंतु और के जदि तुमे भाबो जे एटा मोर अधिकार है बोले एब्यूज हवा स्टार्ट हे तो राइट केते जगह रे प्रिविलेज भी दिया है केते किसी प्रेफरेंशियल पोजीशन भी दिया है तो एक्चुअली हाँ तो एक्चुअली लॉ रे जेन आउ जेन आजिकली जेन लॉ रे बहुत एब्यूज होचे मुई देखु जे कि जनता की एक्सीडेंट हला एक्सीडेंट जगह रे भी एब्यूज होचे लॉ रो तापरे कैनसे माने कैनसे जगह रे स्टूडेंट लेक्चरर इमानकर भितरे भी गुटे गुटे लॉ रो एब्यूज होचे हस्बैंड वाइफ ई सब रे भी लॉ रे एब्यूज होचे माने फादर सन ये सब जगह रे लॉ रे एब्यूज होचे तो मुई 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 जदा जानली तमे माने गुटे इनिशिएटिव नै करी गुटे बही रो किछि गुटे अंश गुटे लेखितिलो कि लेखिछ से बहीटा पब्लिश हलानो कि नुए हुए नहीं वही पब्लिश है जे हाँ गुटे एक्चुअली हेरा से गुटे बहीटे रो कॉल आइसथिला जे फ्रॉम अब्यूज टू अब्यूजर बोलती हां तो एक्चुअली हमें लॉ रो खाली तर जू जेतु जेते बेले भी लिटिगेशन होचे जुड़े पार्टी किसे हां तो सब बेले खाली गुटे साइड देखले नहीं हुए हमको आरो साइड भी देखवा के पड़ो तो ई जेन बही रो जेन कॉल आइसथिला फ्रॉम अब्यूज टू अब्यूजर बोलकी पब्लिश हला ऑलरेडी पब्लिश हला काना काना एक्चुअली से बही रो अच्छे काना तर विभिन्न पर्सपेक्टिव थिला एक्चुअली আমার হ্যাঁ যেটা দেখালো যা মিসইউজ অফ ল ইন ইন্ডিয়া আমার ইন্ডিয়ারে বড়ভাগী ল উমেন সেন্ট্রিক ল হ্যাঁ যদিও আমার সোসাইটিটা মেল ডোমিনেটেড ଆଉ ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ ସଫର କରୁଛନ୍ ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ सोसाइटी तो लॉ गुटे टाइम रे इंता हिसाब रे तैयारी करागला जेनटा कि झियो मन को प्रोटेक्शन देबा बोल की बनावा बट अनफॉर्चुनेटली सही पोजीशन टाके विभिन्न टाइम रे मिसयूज करागला विभिन्न विभिन्न ग्राउंड फॉर इंस्टेंस मान लो डाउरी डाउरी रटाके डाउरी के प्रोहिबिट कर दिया गला तो सब कथा बहुते डाउरी डेथ भी हैला बहुते झियो जल्ले तो लॉ के तो रिएक्ट करवार थिला स्टेट के रिएक्ट करवार थिला तो स्पेशल लॉ भी बनाले किंतु तार संगे संगे जेन घर भितरे जेन डोमेस्टिक वायलेंस डाउरी रो जेन इश्यूज थिला इनता भी कथा आसला जेन माने कि से जेन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देबा लगी जेन प्रोफेशनल ट्रीटमेंट दिया जाउतला झियो मान के तो जेन माने टिके बेसी जानकारी रखिथिली या टिके बेसी एक्सेस थिला इंफॉर्मेशन के हाँ तो मैंने से पोजीशन रो गलत व्यवहार कर तो गलत व्यवहार करबार द्वारा काला हैला जेना हम कहूतली छोट माछ के जेते बेले बड़ माछ खाउ तो जस्टिस सही नहीं पाए लेवल प्लेइंग नहीं रहला तो बहुत के इनका मेल मेंबर सफर करे बिकॉज़ ऑफ दैट प्रेफरेंशियल ई तो ई बही माध्यम रे हमें जे आर्टिकल लिखितिनो वी हमें लेकिन नहीं करबार जे नेके झियो मानकर पोजीशन केनता अछि बोली के समा दे दोस एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड किंतु तार संगे संगे इटा भी जरूरी है कि जेन काउंटर पार्ट मेल मेंबर्स अछि तांकर वर्सन के भी देखवा कथा कारण इस साइड के जदि तुम्हें लेवल प्लेइंग नहीं दबा बोले तुम्हें जस्टिस नहीं करबा तो इट्स बिकम नेसेसरी कि गुटे से अदर पर्सपेक्टिव ऑफ द मेल मेंबर्स सेटा देखबा लगी ई बहीटा बनाइतिला आ सेथिरा गुटे सेगमेंट आमे कवर करी तो एटा खाली फीमेल आ माने गुटे फीमेल टे गुटे मेल माने लॉटा फीमेल सेंट्रिक है छे कि कैंसी जगह इंता अच्छे कि कैंसी लॉ गुटे मेल सेंट्रिक लॉ भी है हेंता नहीं बना है कहनी जगह रे मेल सेंट्रिक लॉ नहीं बना है किंतु आमर जन इटा भी बिटर ट्रूथ है जे आमर देश रे जन लॉ मेकिंग एजेंसीज अच्छे या जेन माने लॉ तैयारी करसन इट इज डोमिनेटेड बाय मेल मेंबर्स झियो मतलब भी जदी लॉ बना होचे भले मेल मेंबर माने बनासन तो खाली
मेल पर्सपेक्टिव रे मेल मेंबर डिसाइड करबा झियो मन कले केटा भल है खराब है हेटा ठीक नुहे है मोर हिसाब रे हां तो मैं नहीं कह कि केनी किंतु इटा भी सत है जे because of the existing law in spite of the existing law the women's had suffered but the ଆମେ ଯେନ୍ ଇ ଯେନ୍ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ କଥା ଲାଗୁଥିଲୁ ଆମେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ के प्रोटेक्ट करबा ਲਈ बहुत लिटरेचर अछि बहुत लेखा अछि किंतु मेल मेंबर्स ମାନଙ୍କ पर्सपेक्टिव के जानबा लागि देखबा लागि सेति लागि भी एफर्ट्स देबा लिटरेचर तैयारी करबा जरूरी है तो ई बही माध्यम रे से एफर्ट तके दिया है अच्छा तो से एटा एटा हो से बही फ्रॉम एब्यूज्ड टू एब्यूजर मिसयूज ऑफ लॉज इन इंडिया सत्यम पब्लिकेशंस रो येथिला अच्छा तो एटे देखमा के काना ये करूछन कमेंट देछन दासरथी साहू आज्ञा कहउछन दुही मित पूरा ठीक नमस्कार तापरे हाँ तापरे स्वस्तिक स्वस्तिक स्वस्तिका समृद्धि कहूचे कुचिंडा रे देखुचे नमस्कार सत्य अंकल के केनो छाड़ी देला बोली कहूचे तो कहूचे विश्वजित अंकल आपनकर बैकग्राउंड एकदम मस्त लागुचे एटा नवा घर उठे गिल्लु तो बल्ले एत लगी अंता ही मैं भी देखी कि कंफ्यूज देई गली मस्त के आवश्यक पछाड़ा अछि पूरा सबो सबो किछि अछि बले लॉटा गुडे हेंता जिंस है किंतु स्टूडेंट मान कर लगे हेंता माने आजिकली मु देखो जेंता आहुरी बहुत सारा लॉ अछि जेंता कि गुडे सिविल लॉ हैला क्रिमिनल लॉ हैला क्रिमिनल लॉ रे काना माने हेंता किछि किछि अछि जेंता कि मिसयूज हसी हां केहनी भी जिंस रो मिसयूज हबा लागि सब ले स्कोप किछि फॉर इंस्टेंस एचिन धरी नियो हमर 498 ए आईपीसी रे हेड बदली दिबा 498 ए जे झियो के जिन अत्याचार करा हेसी सेथिर लागि किछि मतलब जदि झियो कंप्लेन करबा तो पुलिस इमीडिएटली एक्शन नउथला हैला 498 रे आउ सेतार द्वारा काना होतला तुमको बेल भी नहीं मिले इमीडिएटली तुमको भर्ती कर दे तो इंटर इंस्टेंस जानी छे हमर पड़ारे गुटे हंता घटनाटे घटितिला जिंतरे कि जेन आई बुढ़ी थिले से शी वाज इन हर 90s तो ऑलरेडी बेड रिटर्न थिले किंतु जेहेतु कंप्लेन करा हितिला एंटायर फैमिली जियोटा कंप्लेन करथिला पूरा एंटायर फैमिली रो ना रे तो पुलिस आसी कि समस्त को नेबा लागि चेष्टा कर खैर से दिन केही अरेस्ट नहीं हेले किंतु से बुढ़ी के भी नेमु बोली भाबुतिले किंतु देखले जे नेले तांको बेसी प्रॉब्लम तो लॉटा जेहेतु एते टिल्ट कर दिया हितिला तो गुटे सिंपल कंप्लेन रे बिना वेरीफाई करी कि जे वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट गुटे ओल्ड लेडी बेड रिडन आ तार अगेंस्ट तुम कंप्लेंट केनते कि सस्टेन करबा जे से झियो के अत्याचार करू तो हे एब्यूज का सब बोले पॉसिबिलिटी खाली मेल बोली कि नुहे है फीमेल अगेंस्ट भी हेई पारे तो जे जार इन्फ्लुएंस होचे पुलिस पाखे कांटेक्ट होचे या अलगा किछि कांटेक्ट होचे तो sometimes law become an instrument of exploitation also हमर मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी हिसाब से देखो होले तो आ केही भी केनी हिसाब रे मिसयूज करी पारे इटा की जगह बोल कि नुहे धरि नियो विभिन्न टाइम रे कॉलेज हो या स्कूल हो या हॉस्पिटल भी हो जेते बेले किछि गोटे इशू हेसी इमीडिएटली स्ट्राइक कॉल कर देसो हला तो उनको स्ट्राइक करबे पिला माने ताला दे देबे जस्ट भाबो जे बाहरु जे माने आइस्तिरे से मानकर एटा एब्यूज ऑफ पोजीशन नुहे जे माने स्ट्राइक करके ताला दे देबे डॉक्टर माने स्ट्राइक कर देबे या स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट माने स्ट्राइक करके हॉस्पिटल बंद कर देबे काना ताकर आर्गुमेंट ताकर डिमांड जेन्युइन हे थई पर किंतु थिंक अबाउट द अदर पार्टीज पोजीशन काना सिंस यू आर पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर तुम से स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ खतरे लगे मनीषा कम कर दबो हां माने टीचर्स माने एग्जाम आगरु स्ट्राइक कर देबे
तुम जस्ट इमेजिन कर छुआ मंगल अवस्था काना हबो तो हमें हमर पोजीशन के अब्यूज नहीं करू छु समस्त एंदा करसन तो किछि उडे स्टेटस पावर अथॉरिटी दिया है किंतु हमें सेटा के अब्यूज करबाटा से स्कोप पे सब लेचे तो लॉ रे भी तुमको किछि क्षमता देछि किंतु तेता केहनी भी व्यक्ति जेते बेले चाहबा सेकी बेले तार केहनी यदि केहनी क्राइम हेइ जे या केहनी क्राइम ना रे देई पारबा एबे रिसेंटली गुटे इटा जुडिशियरी भी हेसी जे जेते बेले चीफ जस्टिस तालपदर थिले ओडिसा हाई कोर्ट एबे गले न तो गुटे डिस्कशन होउथला जे सब जजेस माने बसी थिले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो जजेस माने थिले एटा कटक रे हेतला तो लाइव सेक्शन लकीली सुनुथिली तो सेतिरे इटा कहउथिले जे पुलिस हागे काना करसी सिंपल जेंटा इंजुरी थिबा के कापड़ मार देला या मुड़े मारी देई छे हला तो सिंपल इंजरी हिसाब 323 रे केस हे जिबा कथा जेंटा कि बेलेबल ऑफेंस हे जिबा कथा किंतु से माने जबरदस्ती सेतिरे काना लगे देबे 307 अटेम्प्ट टू मर्डर तो 23 जगह रे संगे यदि 307 लगे देले बेले काना हबने के नॉन बेलेबल हे जिबा तो से लोक भितरे रहला तो हेटा एब्यूज ऑफ पावर नहीं है तो सबुले लॉ क्षमता देसी भल लागे किंतु लोक ठीक डायरेक्शन दे ठीक हिसाब रे व्यवहार नहीं कर बोले एब्यूज तो है भाई करेक्ट दासथि आज्ञा गोटे लंबा चौड़ा मेसेज देछन 1978 रे मैं जिला स्कूल रे जॉइन करली आ 79 रे साधारणतंत्र दिवस लागि नेहरू युवा केंद्र द्वारा हेतिबा प्रबंध प्रतियोगिता रे फास्ट हे करे परेड ग्राउंड रे पुरस्कृत हेतली से दिन जयदेव आज्ञा को संगे संपर्क बढ़वार के लागला मोर भाई कामदेव संगे राजेंद्र कॉलेज रे एका संगे काम करूतले सेनु चिन्हा परिचय बढ़ी गला दुही हमर पिलाकर आलोचना देखि रे बहुत खुश लागुचे आज्ञा को बहुत दिन फोन नुए करे आज्ञा आजी करबे आजी रात मैं सबले भाबसे आजी फोन करबे बोली रे किंतु टिके ऑफिस काम थे टिके बिजी रहि रे करि नै बार लास्ट टाइम सांकु मी बरगड़े भेट पड़ी थी हां उमेश कोजन बेंगलुरु देखुछ दादा तुमर पैशन के मानबार के पड़बा कंसिस्टेंटली बकबक शो करूछ केते वर्ष चाली छे चालू केते केते चालू मोय तो कथा बहुत लागसे बेले मते किछ असुविधा नै न सो दीप्त पंडा बतामी आज कमेंट पे सर अगरु जन कमेंट हां जेते बेले घरु बाहरी के आसीली आज का हमर गोटे कॉन्फ्रेंस थिला तो मैं घर के डेरी रे पहुंचली डेरी रे पहुंचला परे जेते कहली मैं जाऊ छे डिपार्टमेंट कहले फेर बाहरी के जाऊ छ जेंता हम जेंता घर रिएक्ट करसन तो हम कहली नहीं नहीं बकबक के जाऊ छ बेले बकबक बोले तो मितर सो के कहली हां के कथा लगवार छै तुमे काना कहलो जे बकबक के जीव एखनी तक तो हमरा किछ न करबार था तो मैं जानि पर छै बकबक के पहुंचला न तो कुडोस टू यू तुम जे हिसाब से करू तो आपको एंजॉयमेंट दो तो सुदीप्त पंडा भजन दुई दादा मन को जुहार सुशांत पाणिग्राही भी देखुचे कोचे बहुत बढ़िया सुनो तो सांग हां सुदीप्त फिर कोचन विश्वजीत दादा और प्रयास दादा के एका संगे गोटे फ्रेंड थी देखि करी खुश लागुचे एक तो बेस्ट फ्रेंड दुई रे गुटे होस्ट और जरे गेस्ट तापरे फिर कोचन दादा मते चिन्हलो कि नहीं एटा जो रिकू रिकू तुमको इनवाइट कर तांगर घर और ए पुना ना लेख रिकू बोले जानि पड़ली ना हां भले हंदा कथा तो ई बहीटा में तो तमर कंट्रीब्यूशन एकला अछि कि माने मल्टीपल लोग कंट्रीब्यूट करे छ नहीं 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 हां माय अपोलॉजी एक्चुअली ई बही लेखवार आगु ई बही रो तमने जन कोथर होचे संजीव पंडा आ से जन इशू के इधर आगु हम कथा लागि थिलु तो मुई इश्यूज के देखी थी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू किंतु लीगल पर्सपेक्टिव में की सीरियसली हेतकी डीपर जाई कि केबे नहीं चिंता करते किंतु जेहेतु संजीव पंडा भाई है तो
तार संगे जेतेबेले विभिन्न टाइम रे बहुत आगरू कथावार्ता लागिकरी इ बाबदरे बने चिंता करिथिनु किंतु केभे गुटे वेल डॉक्यूमेंटेड मैनर रे गुटे स्ट्रक्चर मैनर रे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म रे अप्रोच करबा लागि चेष्टा ही नहीं करि थाइ या से भितरु से जोर नहीं इसते तो जेतेबेले इ बही रो कॉल फॉर पेपर आसला तो इथर लिंक टा संजीव शेयर कला देन वी डिस्कस अबाउट दिस तो मेजर प्रॉब्लम इटा थिला जे केहनी भी जिंसर लीगल इश्यूज रो गुटे तो लीगल फ्रेमवर्क थिला आ गुटे जेन ग्राउंड रियलिटीज लीगल फ्रेमवर्क रे ग्राउंड रियलिटी के जेन देखवा कथा सेटा जरूरी थिला तो लॉ टा मोर डोमेन थिला किंतु जेहेतु संजीव निजे more or less suffered because of this bias structure of the law, especially with reference to custody of a child. Our existing law रे ये बही रो बहुते सेगमेंट थिला गुटे सेगमेंट थिला चाइल्ड कस्टडी तो हमें से चाइल्ड कस्टडी के नहीं करी आगु डिस्कशन करथिलु आ ई बहाना रे जेहेतु संजीव रो ता निजर पर्सनल ट्रॉमा पर्सनल एक्सपीरियंस थिला तो सेटा के हमें मुई से लीगल फ्रेमवर्क भितरे पढ़ी कि देखवा लगी चाहूथि तो संजीव मते से प्लेटफॉर्म टा देला आ इतार द्वारा निजे बहुत जिंस जानली तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट क्रेडिट गोज टू संजीव फॉर दिस राइटिंग दिस आर्टिकल तो अछन अजने संजीव नो भी सुनु काणगणा से लगे जे हां संजीव तो अच्छा म्यूट रहो म्यूट समस्त को नमस्कार थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी तो ई दिन बही तमे दुए जन मिसिकरी लेखलो मुई तो जानि छे तोर माने गुटे पर्सनल ते माने लाइन से इश्यू रे तो चैलेंजेस रे माने जाउछु तो एकला तुई तोर जिनिस के भाबी करी लेखलु माने जणे जतकेले निजर जिनिस के भाबी करी लेखसी नै के सेटा गुटे बायस થઈ जायसे नै के मुई जतले मोर जिनिस के लेखमी मोरटा जतबेले मुई ही ठीक है मुई ही सब ठीक कहूचे ई सब जतले मुई भाबी करी कोटे जिनिस के लेखमी बेले सेटा जे भी सुनबा थर्ड पार्टी जे भी सुनबा इतार ऊपर छै ई बायस થઈ छै तो एकला तुई आउ कि हेंता आउरी बहुत जन अछन जहा के तू देखि करी ई जिनिसटा लेखिछु आउ अलगा मानकर कॉन्टेक्स्ट तोर कॉन्टेक्स्ट है केंता सिमिलरिटी है सेटा के नै करी काना लेखिछु आ केंता लेखिछु बस तुम्हार क्वेश्चन इज वेरी वैलिड क्वेश्चन रो आंसर दवर आगरू मी गुटे जिंस ऐड ऑन करमी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जेंटा प्राइस दैट माने जेंटा आंसर दोतले बही रे there are different chapters in the book so agra re bohi release hala and then there are many baharu bahut jon achon jin mane contribute karichon in segments like false rape case 498 domestic violence re bhi so many false cases just to cite you there is also a term defined coined by Supreme Court in one of the judgments says that legal terrorism because more than 90% of the 498 cases are false and so similarly to that extent many of the sections or act are being misused and some of the renowned personalities academicians and practitioners legal practitioners including Deepika Bharadwaj who is very well known in the national level as a men's right activist and few others who are also known academician in the legal fraternity all have contributed I'm like one of those who are being victim or probably
self nije experience kala pore likha hoiche. So Prayas da had given is the perspective of the legal frame of it. So that's what this section. So we ame gote section nechu. That section is basically the how in the child custody, especially when it is a man or a father who is fighting for a child custody, how he is deprived of, and that's how, because it is being misused, the child custody case. Similarly, others have written about the other acts. Now, coming to the point jenta tame कहलो जे more experience and other experience. So like मुझे तो निजे भुक्तभोगी है. I'm fighting this for the last 4.5 years. Every section law. I'm basically person from finance field, but in the last 3-4 years bodhe mui law relevant law technique sabu jinsa padicha, including judgments and all. So I have come across many judgments where I have seen that clearly. There is a common trend that the fathers are, most of the cases, well, I'd say most, probably it is in the upper side of like 80-90% of that, are suffering because of whatever it is, the structure, intent, or intensity, or whatever. And jetu mui suffer koruja, so at the same time I'm interacting with so many people across India. We have common groups because there are so many fathers who are going through the same pain. So common discussion, common point re, I have found some of the other cases re kinta common hoche, kinta problem face korucha. Like in my case, and just to cite an example, in my case there are few things which are extreme, which is typically not happening in most of the cases, like a denial of even physical visitation by so-called order by a court is something which is not acceptable in most of the cases without any reason. I mean, without a valid reason, giving a visitation or just a phone call. So, which is extreme in my case because of obvious reasons. But then there are other people who are given like 1 hour, 15 minutes, 2 hours. संबलपुर ते कहबो टके तो हाँ, तो मैंने घंटे 2 घंटा इन ए मंथ की वीकली थोड़े भेटवार लगी फादर मान को दिया जैसी, जेंटा की टू बी वेरी फ्रैंक, फादर गोटे जेल रे गोटे जेतेले क्रिमिनल थेसी ताके आउटसाइडर जेतेले विजिट करी ऐसी ताके से टाइप रो ट्रीटमेंट और से टाइप रो विजिटेशंस दिया जैसी. So visitation word itself is like very derivative, right? बहुत कम माने गोटे जेल के जनता जने जदि क्रिमिनल के जेल की विजिटेशन दिया ऐसे संता ना दिया जे करी पेरेंटिंग टाइम की विजिटेशन बोली भी दिया होचे. So वो मोर जन एक्सपीरियंस पता कहउचो that I have gathered from many people. अब मैं बहुत जन को सुनला परे देखला परे and then including my experience मैं एटा के लिखी छ. गोटे इंटरव्यू करू छे जन कहूतलो ना बायस्ड भाइल ही जीवा ପାଇଁ बोली तो ई लेखला बेल के कंटीन्यूअसली तार संगे जन कथा वार्ता लागुतरे या फाइनल जेते बेले हमें ड्राफ्ट फाइनल कला बेले स्पेशल केयर हमें नउथुनु जे हमर लेखाटा पारु पर्यंत ऑब्जेक्टिवली लेखा गया जेतु he was emotionally charged up, emotionally he had suffered करू. तो आमर लगी जरूरी थिला कि आमर लैंग्वेज आ आमर पर्सपेक्टिव ता गुटे ऑब्जेक्टिवली जेटा कि हमें से आर्टिकल में कैंडिडेटली मेंशन करथिलु जेटा कि हमें गुटे कॉमन ग्राउंड पे भी बनौथु. तो तुम जब क्वेश्चन थिला कि बायस नु तो से ड्यूटीटा मोर पाखा थिला जे बायस नहीं जाऊ. तो गुटे मेल पर्सपेक्टिव पे जे सफर करूथिला because of the existing law and because of the existing operation of the law से थोड़ा से जिनसटा के हाईलाइट करबा ले करा होतो. राइट. तो तमर एक्चुअली रोल टा कणा थिला माने जे लेखा है छे तमर रोल टा कणा है और संजीव रो रोल टा कणा थिला. नहीं हे जा जे पहला जे तोला आगरु तो गुटे ग्राउंड वर्क के मते से बतई थिला
କିନ୍ତୁ ତାର ବାହାରେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯେନ୍ ଲଟା ବି ଥିଲା ତ ଇନିସିଆଲି ଡିସାଇଡ ଏଟା ହେଇଥିଲା କି ମୁଇଁ ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରମି ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଯେହେତୁ ତାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସ ବହୁତ ବେଶୀ ଯେନ୍ ମାନେ ସଫର କରିଛନ୍ ବିକଜ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ପୋଜିସନ ତାର ସେ ଯେନ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିছে पर्सनल एक्सपीरियंस होचे सेटा के इ लीगल फ्रेमवर्क साहे केनता टसल करছে सेटा के हमको रखवा तो पहला नु डिसाइड करा हितला सेटा तो दुई जन अलगा अलगा लिखिथिलु किंतु परे सेटा के गुटे सिनर्जी करी कि दुईटा के एका संगे रखा गला जे पहला यदि आर्टिकल रे देखबो बोले भी आरंभ रे पहला लीगल फ्रेमवर्क के डिस्कस करा हिचे तार परे ग्रेजुअली आमे से जेन एग्जिस्टिंग लॉ रे जेन प्रावधान अछि या जेन स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन बना हिचे फॉर इंस्टेंस जेता बतौथिला जे गुटे प्रिजम्पशन पे अछि हमर एग्जिस्टिंग रे गुटे प्रिजम्पशन पे अछि जे मां पाखे छुआ सब बोले भल रहला ई प्रिजम्पशन टा काना आजिर तारीख रे 21 तारीख मु नाही खबर बट पॉइंट इज काना इटा सब बोले हंता है काना पापार रोल इक्वली इंपोर्टेंट नुहे आउ अरे हमें आउटे पर्सपेक्टिव के भी नहीं थिनु जे ई मां और बापार मार भितरे छुआ केन सफर करूचे छुआर जेन असुविधा टे होउचे कने छुआ के दुई मां बाप दरकार खाली मां दरकार नहीं कि खाली बाप दरकार नहीं जेता वेजिटेशनल राइट कथा कहला जेता तुम्हें तो से जेन गुटे कोडियल एनवायरनमेंट से जेन छुआ के दबा कथा दुई जन कर तो हमें लास्ट सजेशन भी देथि जे ई जेन प्रॉब्लम रो पेरेंटल एलिगेशंस रो जेन प्रॉब्लम ता रो तार सॉल्यूशन ता काना है ये बेटा दे पारबा कने जेन पेरेंट्स माने जेन सफर करिचन आउ बिकॉज ऑफ दैट छुआ भी सफर करि तो दैट इज इंपोर्टेंट ऑन दैट काउंट तो हमें सही हिसाब से डिसाइड करके इटा लिखाई राइट तो कुटा हो जे माने जेंता कि देखो एछन हमें काना कला कि हमें एग्जांपल गुटे साइड रो एग्जांपल दोछु गुटे बापा रो हमें किसी इंता एग्जांपल देखे मुई देखो मुई संजीव रो केस पूरा जानि छे मोस्टली अलगा माने भी जन माने रेगुलर देखु थिबे नै के से माने भी बोधे संजीव रो केस मोर और लेस टिके माने टिके जानि थिबे तो मुई जानबा ले टिके मु चाहू छे सो दैट ये बायस नै हो डिस्कशन ता इधर अलगा आरो साइड ता भी अच्छे का बिल्कुल अच्छे बिल्कुल माने मुई संजीव के पत्रामी संजीव जेहेतु रिसर्च करि छे इतार ऊपर इधर आरो साइड भी अच्छे का संजीव जदी अच्छे बले दुही साइड रो परसेंटेज केते केते हंदा किछि आरो साइड माने गुटे फीमेल टे सफर होउछे जदा तोर केस रे तू ही सफर होछ तोर छुआ लागि हंदा आरो साइड अच्छे गुटे फीमेल टे सफर होता तार छुआ लागि सो यस देयर माइट माने किछि केसेस थिबा निश्चय थिबा इनफैक्ट भी जानी छे केतेरा केसेस अच्छे जेन जगह रे की मदर के छुआ के एक्सेस नहीं मिली और विजिटेशन नहीं मिली और जदी भी मिली छे सेटा एग्जीक्यूट नहीं ही बट दैट रेशियो माय दो आई हैव gone through a lot of documents and articles and reading and experience that ratio would be less much less it is like a 80-20 ratio करेक्ट माने थिबा किंतु रेशियो टा मुई इथिले कि रेशियो टा कम आए बोली कि मुई एग्री भी करू छे आ माने मुई पूरा मुई काना बहुत जन एग्री करबे काहे हमें यदि सिनेमा भी देखबा आगो कालर सिनेमा भी देखबा बोले मोर गुटे गीत के स्वर पड़सी केन सिनेमा जे मैं कहि नै पारे बाप का प्यार माँ दे सकती है लेकिन माँ का प्यार बाप दे नहीं सकता बोले गुटे गीतटे अच्छे तो किंतु तार अदर वे राउंड गीत नहीं न बोले मते मुई भी एग्री करू जे कि सेटा अच्छे किंतु ई जिनिसटा माने इधर गुटे समरी गुटे कहले संजी भल हेबा तमे जन बही लिखिछ तार समरीटा काना आ तार माने कंक्लूजन टा काना बही रो सो तमे यादी जन कहलो कि द अदर साइड टिपिकली कागरी रेशियो दुईटा जिनस गोटेला
कि naturally fathers माने घरू बाहर के जासन for their own earning, better माने bread and butter लगी जासन, right, for their livelihood लगी. And छुआ मन को सही टाइम रे opportunity नहीं करी, typically those जिन मन का wrong intent अच्छे जिन mother मन पर से माने से जगह टके advantage नहीं करी छुआ के सेनु नहीं जासन या छुआ के बापा नो अलगा करा है ଆଉ ଏଟା ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ କଲଚର ଅଛି, ସୋସିଆଲ କଲଚର ଇଜ दैट कि माने फादर माने ही बाहर के जिबे बेसी टाइम बाहर रहबे खाली रात्रि आसले और संध्या रे आसले एंड मदर्स हु आर हैविंग दैट इंटेंट से माने सेटा करछन. सो हेति लागि गुटे दैट इज वन ऑफ द कॉमन रीजन ऑफ द व्हिच इज नेचुरल एडवांटेज. सेकंड इज दैट कि हमर लॉ कहूचे ये टिल 5 ईयर छुआ मां पाखे ही रहबे एंड जिन माने खराब इंटेंट रो अछन चाइल्ड ऊपर जिन माने अब्यूज करूछन से माने 5 वर्ष तक बाय डिफॉल्ट से मान कने गोटे बिग एडवांटेज होउची जिन एडवांटेज रे कि से माने से छुआ के ब्रेन वॉश करूछन या एक्सेस बॉन्ड कर दूछन से छुआ जानि ना परबार. आई नो सम ऑफ द केसेस से छुआ जानि नै तर बापा की 5 वर्ष तक मां 100% ब्लॉक करके रखी छी. थर्ड पॉइंट इज दैट कि इवन इफ 5 इयर्स परे भी जते बेले होचे जते बेले बापा मान को एक्सेस दिया जाउचे एज इफ दे आर एन आउटसाइडर, बिल्कुल एक्सेस ना आबार तो से छुआ से बापा के जानी ना परवार तार संग मिसी ना परवार जदी भी मिसला जेंदा मोर केस रे मोर छुआ बहुत भल कर जानी छे बिकॉज़ सेटकी वेल के से 8 8.5 वर्ष रहितला नो सेटा कि एते हैरेस करा होचे या एतकी ब्लॉक करा हिचे कि से छुआ बिल्कुल मोर ना भेटी परवार. मोर केस रे कोर्ट रो ऑर्डर रो परे भी मते भेटी ना दिया. सो माने ऑल दीस थिंग्स बिल्ड टुगेदर कि छुआ मन को तमे जे अदर साइड ता कहलो अदर साइड आर देयर बट देन नेचुरली एडवांटेज मदर माने अछन एंड स्पेशली मदर दैट डज नॉट मीन कि सब मदर आर खराब बट एब्यूजर इज ए एब्यूजर. इट इज जेनरिक माने कहि नाही होय कि जेंडर स्पेसिफिक नोय से जे मर्डरर है whether he is a male or female it's a murderer. Similarly जे चाइल्ड रो हार्म करू छे इन बाय डूइंग दिस से मदर हो या फादर हो इज अ चाइल्ड अब्यूजर. तमे कथाटा कहलो कि ओवरऑल समराइज करवाले. सो फर्स्ट वी एक्चुअली टच्ड अपन कि व्हाट इज द फैब्रिक ऑफ दिस लॉ व्हिच इज चाइल्ड कस्टडी, history, legacy, and then what stands today. With definitely जहाँ भी development है ची से development रे आजी डेट रे गुड़ाई जिनसर ऑर्डर आसी करी से जिनसर है ची but as of now काना अच्छे structure and then but in this structure रे थाई करी मेरे हमें analyze कर लूँ जे the structure is not itself बहुत खराब नहीं से because there is a very clear line which says that though it has not been dwelt very granular level but then upru jodi bhi kuha jauche bole law kohuchi je the best interest of the child would be the paramount importance while deciding the custody of the child. So what is the best interest? Best interest means ki law support karuchi law kohuchi ki best interest means and scientifically it is proven that best interest je chua provision karna hai parenting ro power kotha. There are some judgments also jenta so coach both the parents are equally important in the life of the child and one sided definitely take kharab karwa but as Prayas has identified very well and decoded it very well that one part is law as such and other part is implementation. So though ita theme re lekha itla ji both equally important and both are important in the life of the child. But when we look at the cases, we found that it is not. And the reason is that the whole ecosystem, I don't know, it is whether intentionally it has been decided, but that's the ultimate. And then we did driven down to what are the challenges typically a man or a father face. So ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେ କାଣା କାଣା ଜାଗାରେ ଫେସ୍ କରୁଛି ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଇଜ दैट कि से नेचुरली डिसएडवांटेज 5 वर्ष पछाड़े स्टार्ट करूची तो मदर तार आगड़े माने लेवल प्लेइंग फील्ड इन होइसे फर्स्ट. सेकंड इज दैट कि तमे मां के दोछो 90 लाइक इन माय केस इट वाज गिवन फॉर 5 minutes phone call and which is exactly 0.2% time of the day.
So तुम्हें मत के 0.2% दो छो, माँ के 98.9 8.9% टाइम दो छो. What kind of so obviously it is not fair. It is not a level playing field. So since challenges similar challenges हमें मतलब all fathers are facing. Visitors are like outsider treated like a third grade something. Child by the time, and then there is another aspect that we have touched कि छुआ बनकु माने छुआ मन ना एक तो माटी रे गड़ा बोली हमें बहुत पुरना शिखाए छे हमें जनता था कि गुडना से सेंता टाइप रो स्ट्रक्चर है पूरी बार तो सही टाइम रे जते बेले कि जणे एब्यूजर है समस्ते जानी पारु छ कि जणे आउ जो गुटे फादर नो चाइल्ड के एब्यूज कर मा चाइल्ड एब्यूज कर छे आ जण को एक्सेस नाही दी करी इन दैट केस रे छुआ के जते जल्दी हवा आरो एक्सेस नाही देले से चाइल्ड सेंता टाइप रही गडी हिजबा जनता जणे नेगेटिव थॉट्स रो गडु छे किंतु डिस्पाइट दैट बहुत केसेस रे वर्ष वर्ष धरी करी विजिटेशन रो ऑर्डर नै आसबा और मे बी आफ्टर ए ईयर वर्ष एंड सो टाइम इज वेरी प्रीशियस इनफैक्ट गुटे छुआर टोटल जदि हमें टाइम स्पैन देखमा गुटे छुआ गुटे एज परे ना से चाइल्ड लेक रे और नाही थाए so it is like ticking time. It's like every day the childhood erase ही चली छे repeat ही चली तो सेति लगी time consuming aspect should also be taken care of immediately. Otherwise it is like mind रे जदि तमे poison भरी भरी चालु छ से छुआर सेतकिर poison already affect ही गला no. It's like गुटे snake bite करला माने immediate ताकि नहीं आ जाउ छे का करी it's because ताकि तार blood level तक नहीं circulate करू. So here also brain and negative thoughts pillar of mind re jete lamba time rahwa. So like that hame jitki challenges gote father usually typically face karsi there are you will be surprised to know people ask ki like in my case and many other cases parental alienation we have to establish in a court that there is by default the child has been separated from the father itself is its alienation. But the question prove that it is alienation. How, it's like that. In this drama, the ultimately what we have summarized is that कि छुआ जे सबुतरु innocent है, तार किसी fault नहीं है ना, से ultimately brainwash subject और brainwash ऐसी, आउ से तार lifetime लगी, बहुत जिनसे negative ऐसी, there are a lot of articles which says that कि child long term negative impact ऐसी. So and the last thing we have suggested is that because the child is the ultimate thing in fact I think law commission in 2014 or 15 has also recommended कि share parenting should be implemented. We have also touched say point अभी touch करिछु because ultimately solution is that to find जेंटा की छुआ रे ठीक है जे संजीव तू तो माने मार्केट एनालिसिस करसु फाइनेंस एनालिसिस करसु एतके कथा तू सिखलो गेनु मु जतके छावले सिखे हेतके के तन्नु बेसी बेसी सिख जाइछु so in stock market one of a very popular analyst and fund manager says that there is nothing a bad time or good time or a bad stock or bad bad peak or a good peak. He says either you are successful or you are learning. So probably more life mute hela so more life re unhappy incident hela yes what you are saying is right. I was a passionate equity I was passionate for equity but graduation time room or equity route drive or passion thila मैं सेते लगे equity analyst थी equity investment profession रे थी but मोर छुआ के मन्नु but कहीं ना कहीं मुई मोर छुआ के आर्य मोर पुआ के मुई बधे मोर प्रोफेशन मोर बहुत माने पैशन थिला सत्वे तानु भी बेसी बधे भल पाउतली सो जेतेले मोर छुआ के मननु स्नैच करी करी नि आला I could not control and then I was forced to relocate
has a fantastic career in Bombay as a portfolio manager and fund manager. I left that, came here Odisha asli. Odisha asla pore बहुत स्ट्रगल कली. मते सब प्रकार हेरेसमेंट करा गला. मोर छुआ के भेटवार लगी टॉर्चर. इनफैक्ट हेरेसमेंट इज अ वेरी माइल्ड वर्ड. बोधे गुली मारबार छड़ा बाकी सब किछि सफर माने सब किछि देखि छै हम फेस करि छै. सो टॉर्चर कला परे देन आई माने आई यूज्ड टू बेग. आई यूज्ड टू माने घर सामना रे जाई भिक मागुथली कि मोर छुआ के मते भेटवार लगी दिया जाऊ. And then somehow, because the opposite party reacted in a very inhuman way to me and my son, I had to fight back. So, and when tome jetale kote opposite party, I don't know whether I should say or not, but gote field ro already तार प्रोफेशन रे अच्छे तो तार संगे फाइट करवार लगी तुमको तार फील्ड रे उतरिवार लगी तुमको तार प्रिपेयर्डनेस दरकार. So I did study a lot on this aspect because I'm fighting against judiciary family. It's not easy. I'm fighting with all guts, courage and knowledge. So मते पढ़वार लई पड़ला, बहुत जिनस जानबार लई पड़ला. I was running from one point to another point, pillar to post. Not only law but psychology and many other aspects, even the child behavior, many other things. अच्छा मैं गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक गोटे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट गोटे ठीक है करमे टच करमे जदियो एटा मोर ये नहीं माने एजेंडा रे नहीं थाई तो मेंटल चेंज काना है से मेंटल इंपैक्ट काना है से on child or father नहीं, or who? Other तोर ऊपर तुई काना फील करिछु कि हां मुई टिके पले जाउ छे टिके माने काना कि गोटे डार्क रूम के जाउ छे कि माने आई एम फीलिंग लोनली कि आउ काना मेंटल फीलिंग काना हेसी. So typically simple question, what a father goes through. Okay, so first of all, by default हमर सोसाइटी रो या फिर लीगल पास्ट कस्टडी रो हमें जदि देखबा बेले यूजुअली ट्रेंड इटा आसी छै जे मदर छुआ के रखबे और फादर डिप्राइव हे जिवे. सो बाय डिफॉल्ट ई स्ट्रक्चर के जतले जने गोटे फादर ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के फेस करसी से फास्ट हुई सोसाइटी ताके डिस्करेज करसी. तो सेते बेले ही से मेंटल गोटे काइंड ऑफ ब्लॉकेज रे आसी जैसे फेस करसी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट personal trauma, personal mental depression and all were quite natural because तुम जेतेले तुम लाइफ रो गोटे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रो फैमिली छुआ तार करियर बेसिक फाइनेंशियल्स गोटे घर, these are the बहुत काना कहमी कि प्राइमरी नीड और प्राइमरी इंपोर्टेंट थिंग. तो से जिनस रु जन को जदि तमने तमे डिप्राइव करबो और जन को घिची के नहीं जीवो एब्यूज करबो, so it's not easy to withstand that. In fact मोर कंडीशन एते खराब थिला जे 2019 अक्टोबर रे I attempted suicide because मोर छुआ के मन completely block करैला. And despite begging, pleading and all, mother torture chaltila, continuous torture. I landed in Odisha. Somehow I got strength because sabu friends, relative, parents Odisha re achan. But it's not easy way to pass on. मुई यहाँ भी बहुत फादर के देखु जेन माने तांकर किए जॉब छाड़ी दी छे तो किए डिप्रेशन रे जाउ छे, मेडिसिन खाई करे रहउ छे.
तो किए लाइफ माने एक्सट्रीम एंड के पले गला ना से कोचे ना मते काहरी दरकार सो ही इज लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड तार बाहर जेतले से माने कोर्ट की भी जाउछन इनफैक्ट लोक डिस्करेज करूछन कोर्ट के जगह किछ लाभ नै न बिकॉज़ फादर के किछ नै दिया जाए यू आर जस्ट ए स्ट्रीट डॉग तो despite that common pattern or common perception all the fathers who are fighting heads off to them because unfortunately semane januchan ki they are fighting a very biased battle but still say courage korbaटा जरूरी है इनफैक्ट आगरू सेंदा पैटर्न्स चली आइसला बट धीरे धीरे थिंग्स आर प्रोबेबली इंप्रूविंग आई डोंट नो कितने वर्ष लगवा but of late we are seeing many cases where fathers are fighting tooth and nail how supreme court will काफी judgment माने आसुची किंतु it's not an easy thing most of them go through physical and mental trauma which reflects in their health and mental state कि job lose करूची तो के तार stability lose करूची तो कार health खराब होचे and all are suffering actually they are all suffering राइट तो किंतु संजीव आ गोटे कथा जेंता पेरेंटल एलिनेशन हला कि तते फैक्टर लगी समय नहीं दिया जीवार के ये सब जन कथा ने तू कहलो किंतु मुई जतकी जानी छे तू आगरू माने तोर पुओ के तार जन्मदिन रे भेटुथलो तो एछन केनता आगरू केनता थला एछन केनता होचे So coincidentally जन्मदिन कथा कहलो तो and I'm really thankful for that कि आज ही मोर पूरा बर्थडे है 25th अच्छा yes तो आगरू मुई बॉम्बे रे रहला बेल के मुई मोर ऑफिस रो जेबे भी पॉसिबल हुए आई यूज्ड टू माने ताले स्पेशल प्लान करे मेनी टाइम्स यू नो इट ऑल डिपेंड्स केन वर्ष केन सिचुएशन बट एंता भी ही जे मुई ऑफिस रु 24 तारिख दिन हठात फ्लाई करी कटक पले आइसली एंड सरप्राइज दै छै ताके बर्थडे मनाई छै या तो फिर मुई ताके केनसे ट्रिप रे नि गई जाय छै या फिर घरे तार लगे स्पेशल बर्थडे सो you know a father who loves his child से सब बेले चाहे से जे मोर छुआ केंदे खुश रहू आ भल से रहू तो आर्य के जदि मैं गिफ्ट दूथली या बर्थडे सेलिब्रेट करूथली तो सेताई खुशी होतला सो आई यूज्ड टू डू दैट but unfortunately for the last 3 to 4 years मैं ताके भेटी ना परवा in fact 2020 रे जते बेले मैं ओडिसा आसली से टाइम रे ठीक अच्छे सो तार स्कूल के जाइथली तार बर्थडे दिन आ मुई से दिन तार स्कूल रो सब क्लासमेट मान कर लगी निजे राति रे बसी के सब गिफ्ट पैक करथली रैप करथली नेक्स्ट दिन स्कूल जाइथली 2020 रो कथा and surprisingly school teacher asked me कि आपनो छुआ के कणा नहीं भेटी जाई मी के भेटी एछन so I said madam मु बॉम्बे रे रहू so I just landed and I wanted to give him surprise but that's the last birthday that I could see him after that मते बर्थडे तो काना बिल्कुल दिने भी एक्सेस नहीं दिया जाए घर के गले मिसबिहेव टॉर्चर आ छुआ के बंद करा होचे सो मुई छुआ के तो नहीं भेटी पाली बट आई हाउ कैन आई स्टॉप सेलिब्रेटिंग बर्थडे फॉर माय सन सो मुई तार बर्थडे रे अनाथ आश्रम रे जाइकरी पिला मानकर संगे टाइम स्पेंड कली गोटे वर्ष पिला मान को खाबार लगी दे करी तांकर लगी गोटे टाइम स्पेंड करी करी कली लास्ट ईयर जल छत्र करिथली एंड तार लगी पोस्टर्स बनैथली इनफैक्ट
गोटे पंडार फोटो माने स्ट्रक्चर थिला केक करी करी ताके कटे करी I recorded it on that in the memory of my Arya's 12th birthday wali quickly. So this year also I am doing few things and but it all offline माने offline और माने मी ताके बेटी ना परवार so even thankful to your show कि आज डेट रे मी एटलिस्ट तार रिलेटेड या ताके मने पके करी या तार रिलेटेड आमे किछि कथा लागुछु so I'm celebrating the way whatever is possible on my part. मोटे बैटरी सरी अछि हम तो तमे काना कहमी कहतलो हाँ एक्चुअली वही लेखा बेलके आमे खाली फादर रो पर्सपेक्टिव रो कथा नहीं कहउथाय बही रे आ बहुत इंपोर्टेंट जिंस गुडा कथा से त निजे पर्सनल से शेयर करूतला किंतु गुटे पॉइंट रे आमे दुई जन बहुत एकमत होतु से जन गुटे लाइन के आमे लिखितली दिखुतले जे the study of child is not a matter of rights over the child. Rather, it is a subject matter of rights of the child. तो इजन कस्टडी मैटर के नहीं किरी जे माँ के अग्राधिकार दिया जीवा या बापा के कस्टडी दिया जीवा माँ नु छोड़े किरी हेंता नहीं है ई जे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और एग्जिस्टिंग पूरे बहुत इंपोर्टेंट मने पड़ी गला हम कहि दिसी जेतले कस्टडी रो लागि एप्लीकेशन मूव भी करा जायसी हां ओ जेन अर्जेंसी गुरे संगीत कह कि गुरे टाइम की करी तो वो ये जिन स्ट्रक्चर है माने जिन अर्जेंसी बतावा कथा कि के डील करबा जिन सेंसिटिविटी ता धरबा कथा जिन कंपेंसेशन ता कैरी करबा कथा जे छुआर ऊपर केते इंपैक्ट पड़बा छुआर वेलबीइंग ता के जेन फिजिकल वेलबीइंग कथा नहीं है तार मेंटल डेवलपमेंट तार एथिकल वैल्यू सिस्टम रे जेन तार ग्रोथ रहबा कथा केते एडवर्सली इफेक्ट करी तो ई जेन इश्यूज ता अछि जेन कस्टडी ऑफ चाइल्ड ता के बहुत सेंसिटिवली राइट्स ऑफ द चाइल्ड हिसाब रे पढ़बा कथा रादर देन इन फेवर ऑफ मदर्स और फादर देखबार अपेक्षा तो ऑलरेडी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें बहुत जरूरी है और सेंस ऑफ अर्जेंसी देखबार निदान जरूरी है जेंटा कि एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कथा कहते से माने हेते के अर्जेंसी देखे कि डील करबा इटा कहनी राइट तो संजीव किछि फोटो हमें अजे तोर पाखे जेंडा देखेबा रह टिके मैं ट्राई करू छे एटा हाँ सो माने दिस इज द काइंड ऑफ लाइक आर्य संगे मोर टाइम स्पेंड होतला आर्य के मुई एंदा सेलिब्रेट करूतली आइदर रेस्टोरेंट और आउटिंग इनफैक्ट आर्य संगे मोर इतने बढ़िया बॉन्डिंग थिला जे से मते पापा कम डाके आउ दोस्त क्या यार बेसी कहे बट टुडे दैट चाइल्ड इज कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड ओके एक्चुअली इन द सो जिनिस अंत कैंसन गुटे हेसी कि ना इट इज ए लॉन्ग फॉट बैटल मिता बड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली जुड़े फ्रंट रे चली छी गुटे तो हमें लीगल स्ट्रक्चर के चेंज करबा कथा लागु ओवरनाइट चेंज नहीं की पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करबा के पड़बा और जेंटा कि संजीव घरे करूछ जे जेते बेल को पब्लिक ओपिनियन नहीं हबार तो जेने लॉ तैयारी करतन से लेवल प्लेइंग नहीं दी Amazon efforts के जन endeavor के करी चुजे academic writing from the perspective of fathers and that too perspective of father इथि लगे कहूछु कि ना के आउ से argument अभी था ना well being of the child not the well being of the rights of parents तो इथि लगी जरूरी है तो जन शेयर पेरेंटिंग कथा कहा होछि
ହଁ, ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏ। ଠିକ ଅଛେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଛୁଆଟା ଯେନ୍ ସଫର କରୁଛି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯଦି ଦରକାର ପଡବା ଲ या लीगल स्ट्रक्चर के चेंज करवार लगे इजी आंसर नाइन नो। संजीव घर बागी पिला जे माने सफर करछन सेमान लगी तो बहुत सफोकेटिंग है। जेदा आरंभ रु कहूଥିଲି जे जेते बेल तक जने भी व्यक्ति यदि सफर करूचे ल लगी हेटा जस्टिस नहीं है। तो हमको देखा तो से छुआटा सफर करूचे, तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट वन। तो ऑन बहुत लंबा रास्ता ही माने ऑलरेडी चलले न आके भी एते जल्दी ना हुए, बट थ्रू दिस काइंड ऑफ डिस्कोर्स होपफुली जिनस बदलवा। Hmm. How किसी thought? Anything else, Sanjeev? Uh, I don't know if I'll be allowed. First of all, दिल खोल के बोलो, टेंशन। नहीं आज जेहेतु आर्यर बर्थडे है, मुझे आर्य किसी मेसेज पास करवा ले चाहूँ बिकॉज आई डोंट नो मते केते वर्ष तक एंता तानु ब्लॉक करके रखा हवा, पावर के अब्यूज करके कहा जाओ या फिर लॉ के अब्यूज करके कहा जाओ या फिर इनह्यूमन बिहेवियर देखी गरी। बट मैं किछटा मेसेज पास ऑन करमी बिकॉज आज नहले काली आरे बड़ हवा, द टाइम इज इन in his favor and probably the time is not in the favor of the abusers. तो छुआ जितेले बड़ हवा सेतेबेले से किछटा जिंसो जानू जेटा जरूरी है, तो मैं किछटा पास ऑन करवा ले चाहे मेसेज। एक्चुअली मैं छुआ आर्यर जन्म रू नहीं करी तर ग्रोन ऑफ अपब्रिंगिंग के बहुत सेंसिटिवली एवरी छोट छोट जिनस के चॉइस करी करूथली। लाइक मोर पुओ केन टाइप रो शू पिनभा नु नहीं करी, मोर पुओ केन वर्ड के नहीं करी स्पेलिंग सिखवा मुने यहाँ दे भी हंड्रेड्स ऑफ पीपीटी थिबा जेने कि मैं छुआ रो लगी एक्स्ट्रा लर्निंग लगी बनौथली जेंटा मैं ताके शेयर करूथली या देखौथली। मुझे आर्य के बहुत भल पाइसी एंड आर्य मुई तोर लगी बहुत सेक्रिफाइस कली न बाबा। गोटे दिन भी अंता नहीं जाई जेंति कि मुई तोर विषय रे नहीं भाबी या तोर लगी किसी एफर्ट्स नहीं दे। बॉम्बे रो आई हैड ए फैंटास्टिक करियर व्हिच वाज ड्रिवन बाय माय पैशन। वो पैशन लगी मैं काके तान ऊपर कहीं नहीं थी, बट इट इज यू तो लगी मैं सब के छाड़ी करी आसली। अब स्ट्रगल करू छे बाबा। आई नो दैट कि तू बड़ हेले रियलाइज करबू, यहाँ रियलाइज नहीं करी पारबार बिकॉज तोते बहुत जिनस ट्यूटर्ड करके पठा होचे। तू जिन कथा माने कहूचु से कथा तोर एज रो पिला नहीं कहे केबे भी। हेंस एंड विदाउट मुई तते केबे दिने भी हाथ नहीं उठे, दिने भी गाली नहीं दे, तू निजे एडमिट करूचु इन कोर्ट। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कैंसी भी हिसाब रे तोर मोर अगेंस्ट रे जिबार जस्टिफिकेशन नो, बट तुई से वर्जन टा कहूचु जिन वर्जन टा गोटे नेगेटिव एग्रेसिव वर्जन है। दो जेतेले ताके नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा होचे तुई मते आई कांटेक्ट ना करि पारबार, पचरे बुझी ना पारबार, कहि ना पारबार। आई नो दैट तुई बहुत सफरिंग करूचु बिकॉज यू आर अंडर प्रेशर। तो वापस सब बुझुची एंड योर फादर इज अ फाइटर। सो till last moment I'll fight, and I know that by birth you are very witty, very sharp, and you got a artistic hand. मुई चाहूँ छे और वी आई वुड मुई रादर कहमी कि मुई विश करू छे जे तू बहुत भल पाठ पढ़ आगे बढ़ एंड
make your life a good one. If tu jodi mate bujhi parlu bad hela pore bodhe mui mor life ro sabu pain और सबू struggle fruitful हो गला बोली भाबमी जदि तुई मते बुझी नाही पारलु still probably मुई आउ कहर लागे लडू छ बोली भाबमी because I am fighting for a very noble cause, but this fight will continue. Mita, any last minute thought tomar no? संजीव इमोशनल कर देला न हो लास्ट मिनट पता हां नहीं संजीव हमें हेंता नहीं हंसबार बुझलो नॉर्मली हंसु जो है ना नहीं बाबू के तोर कथा नहीं चलो ठीक है ऑलरेडी संजीव युद्धटे लड़ुचे चलो ताने चल सब आके ठीक है चिंता नहीं चलो बढ़िया गोटे भल लर्निंग The good thing is that I have turned author. And in a subject which I पहला नु मते बड़ा complex लागे. So नहीं किंतु हमें लेखला वाले बने किछि डिस्कशन करिछु खास करी जेन दिन फाइनल ड्राफ्ट बनाला बड़ा लंबा सेशन चलथे yes because marathon session I think हमें संध्या 2 बजे I mean दोपहर 2 बजे रु बसलो जे रात 12 बजे तक at a stretch पूरा कंटीन्यूअस तने आउ बोर्ड नहीं छाड़ी maybe because the kind of topic that you are dealing खाली गुटे नो ब्रेक थिला सेटा हला सिंगडा आ बस that's it बिना सिंगडा रे सब जिंस हे ही नहीं पाए आ तमर मान गले मुई भी गोटे भल एंकर हे जाउ धीरे धीरे अरे देखो माने मतलब घंटे 15 खड़े गपी दे ना कथा लागे ना हैं घंटे अराउंड घंटे 15 कथा लागी जाला ना हमें कहते हां घंटे 15 आड़े हेवा नहीं जना नहीं पड़ला एक्चुअली maybe we are charged up again though we started with a very lighter note but चलो बढ़िया चला हमर आडू भी आर्या के हैप्पी बर्थडे हां मैं तो कटक गला केबे गोटे भेट में चलो बढ़िया विप्लव दंसना को जान हो दादा माने जुहार हो बोले हो जान अरे तुमको गाना को जान दिखाओ बहुत इमोशनल एनीवे बहुत भल लागला आओ किछ रहि गला संजीव मित्र मोर आरो नहीं ठीक अच्छे तो आज प्रोग्राम आम इनो शर्मा नेक्स्ट गोटे आध्यात्मिक प्रोग्राम जेनता मुझे कहते सब मास फर्स्ट संडे आम गोटे आध्यात्मिक प्रोग्राम करमा तो नेक्स्ट संडे टा आध्यात्म उपरे हमर चर्चा हेवा तो बुढ़ा ही बसला ई सब के नहीं करी बेसिकली माने फैमिली वैल्यूज के नहीं करी हमें कथा लागवा जते हे पारबा वाला सेतके बेल तक समस्ते भल से थे नेक्स्ट बक श्योर देखबे आउ केनता लगुचे हमर प्रोग्राम बक प्रोग्राम टा केनता लगुचे हेटा बे कहबे सबको जुहार आउ भल रे थिबे नेक्स्ट प्रोग्राम तक बक बकाओ